Vimal Kumar is also with us. Vimal, harassment. Lovlina Borgohain is saying mental harassment हो रहा है. Commonwealth Games 8 days before. Why is this? आनंद, मेंटल हरासमेंट तो पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है स्ट्रॉन्ग, बट यू कैन sympathize with the athlete, and this is not an event in isolation. If you look at the history of Indian sports, especially the Olympic sports, where all these athletes, top prominent athletes, they do complain that when, because the Vimal, they don't allow them. Vimal, just stay with me. I think I have Lovlina Borgohain's father with me on the phone line. नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ. लवलीना ने ट्वीट किया है. सर, मुझे बताएंगे क्या आपकी उससे बात हुई है या हुआ क्या है बर्मिंघम में? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैंने आज उनका साथ तो कोई ये फोन नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुआ है. एक्चुअली क्या हुआ है ये मैंने तो अभी आप लोग का ये बारे में आप लोग के जो बोला है वो भी मैंने अभी सुना है. अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि तो खेल के टाइम में वो उसको ऐसा होने से उसका मेंटली थोड़ा असर पड़ेगा. मैंने ऐसा ही सोचा है जी. नहीं, क्या ये उसने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था तभी उसको ये दिक्कत हुई थी कि उसके जो कोच हैं, जैसे संध्या गुरुंग जी हैं, उनको उनके साथ ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा है. तो क्या ये पहले भी हो चुका है? देखिए, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे. पहले बात मैं, क्योंकि फेडरेशन जो BFI है, मैंने उसके साथ भी ऐसे इसके बारे में तो कोई बात पता नहीं है मुझे, बातचीत भी नहीं हुआ है अभी. मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि क्या हुआ है एक्चुअली ये तो जब मैं लवलीना से बात करूंगा उसका बाद मैं कह पाऊंगा क्या एक्चुअली क्या हुआ है. जी. तो कल परसों क्या आपकी कभी बात हुई लवलीना से? उसने कुछ कहा था आपको इसके बारे में? वो अभी कैंप के बाद अभी जब गई है? कल तो बात हुआ था. कल वो बर्मिंघम चले गए तो जाने के टाइम में तो बात हुआ था, लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा. तब उसने कुछ ये आपको जिक्र नहीं किया कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसको कोचेस ठीक से नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने? नहीं कहा. वो बोला है हम लोग अभी बर्मिंघम जाएंगे, अभी कल पहुंच जाएंगे, ऐसा ही बोला था. लेकिन ये खेल के बारे में तो कुछ बातचीत नहीं हुआ है. कुछ बातचीत नहीं. जब आपसे बात किया तब वो ठीक लग रही थी, ठीक साउंड कर रही थी, मूड ठीक लग रही थी. हाँ जी, ठीक लग रही थी. और जब कैंप के लिए गई थी तब कैंप में भी उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोचेस नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने? नहीं. वो तो आयरलैंड में संध्या गुरुंग गया था तो. हाँ जी, आयरलैंड गया था. उन्होंने लिखा है कि आयरलैंड भी उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ही संध्या गुरुंग को भेजा. तिकेन जी, ये कहा है लवलीना ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. उसने इसमें लिखा है कि अभी उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग में परेशानियां उठानी पड़ी है. संध्या गुरुंग जी को कॉमनवेल्थ गेम्स के बाहर उन्हें एंट्री नहीं दिया है और मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस गेम्स के ठीक 8 दिन पहले रुक गया है. ये उन्होंने लिखा है. उन्होंने कहा कि दोनों कोचेस को कैंप में भी ट्रेनिंग के लिए 1000 बार हाथ जोड़ने के बाद ही बहुत लेट इंक्लूड किया जाता है. तो इससे मुझे ट्रेनिंग में परेशानियां उठानी पड़ती हैं और मेंटल हैरेसमेंट तो होती ही है. ये उन्होंने उनके पोस्ट में लिखा है, जो मैं अभी हमारे व्यूअर्स को भी दिखा रहा हूं. तिकेन जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसको सॉल्व करना चाहिए? जी, हाँ जी, सॉल्व करना चाहिए जरूर, क्योंकि अभी खेल का टाइम हुआ है, अभी कॉमनवेल्थ नजदीक है. जो हुआ है वो तो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो एक खेल का, देश का भविष्य है, ये खेल का बात है. क्या हुआ है एक्चुअली मैंने तो अभी तक आप लोग का आप लोग बताया है मुझे, लेकिन मुझे तो कुछ किसी ने नहीं बताया ये क्या एक्चुअली क्या हुआ है. जी तिकेन जी, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन यही है कि मैं चाहूंगा कि आप लवलीना से भी बात करें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको जरा जल्दी एड्रेस करे, असम गवर्नमेंट या सेंटर जो भी है? हाँ जी, जरूर. आप चाहेंगे कि वो जल्दी से इसको एड्रेस करें? थैंक यू. मैं चाहूंगा. Thank you. Tiken Borgohain ji, thank you for speaking with us. And now Priyanka Vadra has also tweeted. Priyanka Vadra has just tweeted saying that Lovlina Borgohain is an asset to our nation. She should be encouraged and supported in every way.
I hope the government will look into her complaint and do everything possible to stop the harassment that she is facing. So this is what Priyanka Vadra has now put out, tweeted. Now, there are many who are tagging the Sports Minister Anurag Thakur. Vimal, it's quite surprising that an athlete is coming out and claiming harassment under this arrangement, current arrangement, where athletes are given top priority. And those, especially who are medal hopefuls, are given all the access to all the coaches and the facilities that they need under the top scheme. And Lovlina Borgohain is part of that group. Indeed, Anand, and that's why it's shocking, because if you look at this present government focus is so much to encourage, the sports person, whatever facilities, best of the facilities, infrastructure they could provide. Obviously, in any world, there will always be, inadequacies, there will be difficulties, and the good thing is especially led by Mr. Anurag Thakur, the sports minister, he's an enthusiastic sports person himself, and always tried us. So when this kind of a story comes out, it is really shocking, and I'm sure when it reaches Anurag Thakur, this issue will be sorted out, because that is the kind of person I have seen him in BCCI, the way he has taken players issue, be it contract or be it any issue. So he is essentially, since he himself has been a former cricketer, the interest of the athlete is at his heart. You can expect. But Anand, let me tell you one thing. This is not, as I was telling you, this is not an incident in isolation. If you look at some of the top players, this kind of complaint keeps coming. And a federation has to understand, an athlete who has spent his childhood, the formative years with a particular coach, he or she will be most comfortable. I will give you the example of Virat Kohli. Virat Kohli is going through a sustained struggle. Everyone is, from Sunil Gavaskar to everyone, offering that you should come over, I will fix your technique. Virat Kohli will not go anywhere. He will go to Rajkumar Sharma. Rajkumar Sharma may not be the high-profile coach, but he knows Virat Kohli in and out. So whenever Virat has problems, he is the mighty Virat. He doesn't need anyone. He can access anyone. He can buy any coach. But he goes to his childhood coach, Rajkumar Sharma. So if Virat can do that, our federation has to understand the comfort level, the psyche. There are so many things. It's just not, Anand, that you go to any coach. Yes, sometimes you, and as an athlete, you are receptive to all kind of ideas, all kind of suggestions. But at the end of the day, if the athlete is having some issue before a big tournament, and if he or she is requesting, the request has to be entertained. It is not a big deal, and it has been happening. We have seen with so many overseas professionals, they carry their own physical trainer, coaches, even in the team environment. I will give you example of a lot of West Indian players. When they are even if like the likes of Bravo or Gale, they had their own physical trainer, because they play all around the world. So their duty is not just restricted to their national team. So sports has changed, the requirements have changed, and the federations have to realize they can't be, treating the athletes the same way they used to do it. There has to be a better understanding of athletes, their requirements, and I think it can be done, Anand. With someone like Anurag Thakur there, I think this can be easily tackled. Right. Right. We'll see if the government responds to this, but this is not something that cannot be sorted. Sandhya Gurung is right outside the Commonwealth Games village camp. Now, if she's outside the Commonwealth Games village camp and that one of her coaches has been sent back, as she is claiming, clearly the government is aware that there is a problem. Vimal, clearly the authorities in the Sports Authority of India, they will be aware that there is an issue. Yes, you are right. Maybe, Anand, because if you look at, we just have got one side of the story. We have got Lovlina Borgohain story. She's claiming, and most of the time we trust the athlete. Our default setting is that rather than trusting the federation or the official, our default setting is to trust the words of the athlete, because these are the athletes who bring the glory. That not to suggest that all the time they are 100% accurate. Sometimes they also do it, because they are human beings like us. They also do exaggerate. Sometimes they have different kind of interests. So if ministry looks into it, Anurag Thakur ask somebody inside if this is indeed a genuine case. I'm sure, because I don't think Lovlina Borgohain can take such a big risk, just to mislead people.
Right. We'll see if the government responds, and we'll see how Lovlina Borgohain's concerns are addressed, because she is a medal-winning athlete, a very, very talented boxer, and we don't want the nation's top athletes to feel mentally harassed as we are counting down to Birmingham 2022 as far as the Commonwealth Games are concerned. But at this point, we are